Good morning, friends. So, welcome back to our geography classes. So, we are going to continue with the next topic, that is the biogeography. And I have always been very insistent upon how to prepare physical geography. Or usme, I have always told you that there are certain topics which are always very faithful for the students. They never betray the students. And if you remember, मैंने पहले भी बताया है कि ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी particularly में एक love triangle है, and this love triangle is something like there is geomorphology, which is traditionally a topic which has been so much been focused. So students, if you talk about in this love triangle, they are in love with geomorphology. But there are certain other topics, like if you talk about climatology, oceanography, biogeography, so these topics are the ones where the students, they don't respect these topics well. जबकि स्टोरी ये है कि इन टॉपिक्स में स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होता है फ्रॉम जीएस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम optional point of view, but again the students continue to focus more on geomorphology and neglect these topics. So biogeography is one among those topics which is very clearly being neglected by the students. So I always suggest my students to break this trap or this love triangle and give adequate focus to these three topics as well. And in this context, we are going to talk about biogeography. So अगर हम biogeography की बात करें, तो बायोजोग्राफी में अगर हम देखें तो ब्रॉडली सिलेबस में मैं 3 पार्ट्स आइडेंटिफाई कर सकता हूं. And these 3 parts, if you talk about, one is essentially what we can call it as the pedology, or essentially this pedology is what? It is the soil science. So if I just have a glance at the syllabus, तो सिलेबस को देखते ही पता चल जाता है. इनफैक्ट द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ टॉपिक्स these are given are genesis of soils, classification and distribution of soils, soil profile, soil erosion, degradation and conservation. Okay, so जो first set of जो topics हैं, these are essentially related with pedology. So as we can see, there are a number of topics here given. Genesis of soil. सूरज, एसी नहीं चल रहा. Classification and distribution of soil. Then soil profile. And then there are the general topics of soil erosion, degradation and conservation.
So that is one category of biogeography. And in this category of biogeography, अगर हम पुराने क्वेश्चंस को देखें तो बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं. लाइक वेरी फ्रीक्वेंटली दे विल आस्क यू अबाउट द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस के बारे में पूछा गया है, सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स के बारे में, या फिर क्लासिफिकेशन जैसे कि पेडोकैल्स, पेडाल्फर्स, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं. अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपन्स, स्टूडेंट्स ने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते हैं. Just they take it for granted, and that is why you will be finding that they miss out on many of the very simple topics which are in fact where you can fetch very good marks. Last year की ही अगर मैं बात बताऊं तो I had gone through the PYQs very well, understood that I had a kind of gut feeling कि soil में बहुत, क्योंकि regularly questions पूछे जा रहे थे, so I had a gut feeling they were going to do some kind of innovation type of thing in the question. So I also little bit updated my classes. I dealt with particularly the characteristics of the soil and how these characteristics of the soil affect agriculture, how they are related with agriculture. And fortunately last year itself this question was asked in the examination. तो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू सजेस्ट इज कि ये टॉपिक्स इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं कि इनको प्रिडिक्ट किया जा सकता है. दे कैन बी प्रिडिक्टेड, एंड सिंस दे कैन बी प्रिडिक्टेड, दिस इज समवेयर वेयर यू कैन बी वेरी कंफर्टेबल, वेयर यू कैन बी लाइक प्रिपेयर्ड, एंड दिस कैन बी द डायरेक्ट कैटेगरी. जो मैंने हमेशा बताया, डायरेक्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस वो यहां से आते हैं. तो ये एक बायोजोग्राफी का हमारा मेन पार्ट है. देन देयर इज द ट्रेडिशनल बायोजोग्राफी. अगर ट्रेडिशनल बायोजोग्राफी की बात करें तो इफ वी टेक द reference of a very famous biogeographer by the name of A.R. Wallace. Some of you would have heard about a famous line, Wallace's line, which demarcates the distribution of animals in the world. So A.R. Wallace was of the view that biogeography, the scope of biogeography is essentially what he called it as geographical biology and biological geography. So geographical biology and biological geography. और अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो geographical biology या biological geography, इन दोनों में ही what we are trying to do, we are trying to essentially understand the distribution of species on the surface of the earth. डिफरेंस कहां पर आता है दोनों के अंदर? डिफरेंस बेसिकली क्या है कि जब हम जोग्राफिकल बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, वी ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट, वी ट्राई टू फाइंड आउट सर्टेन कॉमन पैटर्न्स. ऑन द बेसिस ऑफ दीज कॉमन पैटर्न्स हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू डिमार्केट और फाइंड आउट सम जनरल प्रिंसिपल्स. अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो यू माइट हैव हर्ड अबाउट टॉपिक बाय द नेम ऑफ बायोम्स. जीएस में पढ़ा है बायोम्स. तो जब हम बायोम्स पढ़ते हैं तो बायोम्स में हमारा फोकस किस पर है? हमारा फोकस है उन कॉमन प्रिंसिपल्स पर, उन कॉमन पैटर्न्स को फाइंड करने का. लाइक फॉर एग्जांपल, सपोज अगर मैं बात करता हूं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम्स में हम देखेंगे कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है वहां पर, दैट देयर इज इन any of the tropical rainforests we will be finding that there are 3 canopies of trees मिलेंगे हमेशा हमें. ठीक है, हमेशा जो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होंगे वहां पर मिनिमम ये 3 कैनोपीज ऑफ ट्रीज मिलेंगे. और इसकी वजह से
because the density of the trees is so much high, less than 1% of the sunlight is able to reach to the ground. और अगर इतनी कम सनलाइट पहुंच रही है, दैट मीन्स क्या होगा, कैन आई से कि यहां पर ग्रासेस मिलना मुश्किल है, देयर वुड बी लैक ऑफ ग्रासेस. इन फैक्ट हम देखेंगे बाद में दैट सो देर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ग्रासेस विच आर प्रेजेंट, not present in fact. A fourth layer which is found is that of the shrubs, and these most of these shrubs are, because ultimately to get the sunlight they are basically what, they are climbers and epiphytes. तो ये क्या हो गया, एक जनरल प्रिंसिपल हो गया. इसी तरह से यहाँ पर अगर हम बात करें फॉरेस्ट में मॉइस्चर इतना ज़्यादा होता है, यू नो सो मच ऑफ प्रेसिपिटेशन इज टेकिंग प्लेस. गर्मी भी है बिकॉज दिस इज ट्रॉपिक्स वी आर टॉकिंग अबाउट. प्लांट्स को क्या करना है, अपने आप को कूल डाउन करना है. एंड टेल मी व्हाट इज द मैकेनिज्म थ्रू विच द प्लांट्स कूल देमसेल्व्स डाउन. इट इज रेफर टू एज ट्रांसपिरेशन. ठीक है, तो वो ट्रांसपिरेशन करने के लिए उनको क्या चाहिए कि उनकी जो लीव्स हैं दे शुड बी नॉट कवर्ड विथ वाटर. ठीक है, सो यू माइट हैव सीन, और यहां पर हम बाद में देखेंगे कि जो इनकी लीव्स होती हैं वो कुछ कुछ इस तरह की लीव्स होंगी, अलग अलग शेप की, बट लाइक दिस, और दे कैन बी लाइक दिस. ठीक है, व्हाई दिस टाइप ऑफ लीव्स आर रेफर्ड टू एज ड्रिप लीव्स. So what happens essentially, the water is unable to accumulate on these leaves. तो अभी तक जितनी भी बात मैंने की, कैन आई से कि मैंने एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यस और नो. और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अलग अलग जगहों पर मिलते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल यू नो लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड कहां पर मिलता है? इट इज अमेजन फॉरेस्ट ऑफ South America. Then you know there is rainforests which are present in Africa, which essentially includes the Congo river basin and the Guinea coast of Africa. And the third important area of the rainforest is the Indonesian islands. That is the Southeast Asian region. ठीक है, तो इन सब में ये कुछ कॉमन पैटर्न्स मिलेंगे. तो जब हम इन कॉमन पैटर्न्स को पढ़ रहे हैं, when we are studying these common patterns, then what we are doing, we are studying geographical biology. Then there is biological geography, and in biological geography what essentially we are doing, अगर कोई चीज ज्योग्राफी के अंदर यू नो स्पेस इज अ वेरी डोमिनेंट फैक्टर, और अगर स्पेस में वेरिएशन होंगी, अगर स्पेस अलग अलग स्पेस है, स्पेस भी क्या करता है, फैक्टर्स के बीच में इंटरमीडिएटिंग फैक्टर बन जाता है, जिससे कि वो क्या प्रोड्यूस करता है, यूनिकनेस को प्रोड्यूस करता है. ठीक है, सो यू माइट हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दैट ज्योग्राफी की एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है स्टडी की, जिसको हम कहते हैं रीजनल ज्योग्राफी. सुना है? और रीजनल ज्योग्राफी में हम क्या करने की कोशिश करते हैं, व्हाट वी ट्राई टू डू, we try to find the unique characteristic of a given area. We try to differentiate that particular area from the other areas of the world or other regions of the world. तो हम biological geography में यही कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं. We are trying to accomplish this. तो अब मैं रेन फॉरेस्ट का ही एग्जाम्पल लेता हूं. हमने अभी देखा कि जहां पर भी रेन फॉरेस्ट होंगे उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज मिलेंगी. मैंने कुछ प्लांट्स की सिमिलैरिटीज बताई, सेम थिंग एनिमल्स में सिमिलैरिटीज मिलेंगी. लाइक फॉर एग्जाम्पल टेल मी, अगर इतना डेंस फॉरेस्ट हैं, इफ दे आर सो मच डेंस फॉरेस्ट, कैन आई से, एंड देयर इज हार्डली एनी ग्रासेस, तो कैन आई से कि इन जनरल यहां पर हर्बीवोर्स बहुत कम होंगे, ग्रासेस नहीं है. ठीक है, पर्टिकुलरली जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं दे विल बी हार्डली प्रेजेंट. इन फैक्ट कैन आई से, कैन वी, इफ आई आस्क यू, टेल मी, जो यहां पर एनिमल्स हैं उनके लिए कहां पर रहना ज्यादा सेफ है, ऑन द ग्राउंड और ऑन द ट्रीज? दे आर मोर सेफ ऑन द ट्रीज. So many of the larger animals which will be found here, they would have developed arboreal habits. ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, कॉमन है. अब अगर मैंने ये कॉमन चीजें पढ़ रखी हैं तो ऑब्वियसली
मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कि मैं अगर अमेजन में जाऊं तो एक ये कॉमन पैटर्न्स हमें मिले, और डेफिनेटली अगर मैं इंडोनेशिया में जाऊं या अफ्रीका में जाऊं तो ये सब कुछ हमें मिले। इनफैक्ट वी विल बी फाइंडिंग दैट ऑल्सो। बट जब 17th सेंचुरी में, आफ्टर द और सिंस द रेनेसा पीरियड, when these forests were explored properly, zoologists were so much surprised. They became surprised. They did not found a single mammal species which was common among the forests of Amazon and the African rainforest. Not even a single species. तो बाद में देखेंगे, they came up, they called the Amazon region as the New World and the African area as the Old World. Okay, so ultimately कहने का मतलब है कि despite these similarities, what will also be present? There will be presence of unique characteristics would also be found. So in traditional biogeography, we are not just focused upon studying the general principles of the distribution of species, we are also concerned about study of these unique characteristics. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। और अब इसी के हिसाब से अगर मैं सिलेबस को देखूं तो सिलेबस में हमारा एक टॉपिक दिया हुआ है, दैट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, एक और अगर मैं देखूं तो देयर इज द टॉपिक ऑफ वाइल्ड लाइफ। So these are the topics which are directly given in the syllabus. अब यहाँ पर थोड़ा सा syllabus misleading हो जाता है। I would not say misleading. I have told you before also कि syllabus के जो topics हो सकते हैं, they can be inclusive, they can be exclusive. ठीक है, inclusive का मतलब होता है कि जो भी mention है, केवल जो questions है वो वहीं से आएंगे। And if you talk about when they are exclusive, they can exclude, they can in fact, they can include many other things. Okay, so here the syllabus is more exclusive. And if you talk about so the syllabus mentions factors affecting distribution of plants and animals। ठीक है, अब इसको मैं डिकोड कर सकता हूं कई तरीके से। लाइक फॉर एग्जांपल, इसमें एक टॉपिक हमारा बन सकता है, कैन इट बी सिंपल फैक्टर्स which are affecting the distribution of plants and animals, and second topic can be related with distribution of plants, third topic can be related with distribution of animals, and again each of these, tell me, can we say we can think from the perspective of geographical biology and biological geography? ठीक है, तो अगर मैं सिलेबस को मैं देखूं, अगर PYQs में if I go into the PYQs, I will be finding that there are a number of if you talk about questions have been asked. One category has been about the factors. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फैक्टर्स को सही से नहीं पढ़ा। So like for example, one time they asked a question, explain the classification of plants according to the water needs। ठीक है, अब सब परप्लेक्स्ड हो गए, इसमें क्या लिखना है? Just why? Because they were not prepared. In fact, it was a very, very straightforward question, but everybody was puzzled. So people wrote n number of things like Koppen के बारे में लिख दिया, Thornthwaite के बारे में लिख दिया, जो काम की चीज थी उसको छोड़ करके बाकी सब कुछ लिखा। So like for example, if I was writing and I had read, so I could have talked about, in fact you might have also heard about these terms like xerophytic
So there is three, depending upon the water needs, we divide the plants into or classify the plants into three categories. So there are xerophytes, there are mesophytes and there are hygrophytes. Okay, xerophytes में भी बहुत सारे सब वेराइटीज होते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल मेडिटेरेनियन वेजिटेशन जो होता है, लोग उसको बोलते हैं स्क्लेरोफिल्स. जो डेसिडुअस वेजिटेशन होता है उसको बोलते हैं ट्रोपोफाइट्स. जो सॉल्ट टॉलरेंट वेजिटेशन होता है दैट इज रेफर्ड टू एज द हेलोफाइट्स. तो अगेन क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज स्टूडेंट्स हैड नॉट प्रिपेयर्ड दिस टॉपिक ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, जो मोस्ट कॉमन टॉपिक जो ज्यादातर जगहों पर पढ़ाया जाता है दैट इज द टॉपिक ऑफ बायोम्स. सो ऑब्वियसली बायोम्स से भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कभी कभी यूपीएससी जो है वो इट कैन बी लाइक चैलेंजिंग. So they have asked, even when they are asking about biomes, they mixed certain type of unique characteristics as well. So if you have seen the PYQs, you might have seen once they asked the uniqueness of the Eurasian steppe biome. ठीक है, so वहां पर उन्होंने पूछ लिया कि how Eurasian steppe biome is different from the other steppe biome. Like in general, you might see, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं. अगर हम देखें तो जो यूरेशियन स्टेपी बायोम है, इट इज फाउंड वेयर इन यूरेशिया, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, और उस लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट के बीच में मिल रहा है. इसका मतलब क्या होगा कि वहां पर कॉन्टिनेंटैलिटी बहुत ज्यादा होगी. अगर इसको मैं कंपेयर करूं अदर स्टेपी बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल सदर्न हेमिस्फेयर में जहां पर भी स्टेपी बायोम्स हैं, यू विल बी फाइंडिंग one important characteristic is nowhere they are very far away from the sea. So यानी कि जो यूरेशियन स्टेपी बायोम होगा वहां पर क्या होगा, वहां पर जो क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो एक्सट्रीम मिलेंगी. सर्दियों में बहुत ठंडियां हो जाएंगी एंड इन समर्स इट विल बिकम वेरी हॉट. कंपैरेटिवली अगर सदर्न हेमिस्फीयर में देखोगे तो व्हाट विल हैपन, दे विल ऑलवेज बी कैरेक्टराइज्ड बाय मॉडरेशन ऑफ दीज क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, अदर फैक्टर्स, हिस्टोरिकल फैक्टर्स हम बाद में देखेंगे, ड्यू टू विच वी विल फाइंड दैट द यूरेशियन स्टेपी बायोम हैज इट्स ओन सेट ऑफ सम डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्पाइट सेवरल सिमिलरिटीज. तो बायोम्स भी हम पढ़ेंगे, वी विल बी स्टडिंग अबाउट द बायोम्स बट ऑल्सो विल लुक इनटू द बायोम्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द रीजनल डिफरेंसेस, बिकॉज दैट इज one type of question which has been essentially asked. अब दूसरी तरह का जो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, हालांकि अच्छी बात यह है कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दे हैव स्टॉप्ड आस्किंग. ठीक है, बट सिंस दे हैव आस्क्ड इन द पास्ट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड. So if you look into the PYQs, you will be finding they have asked questions on the floristic kingdoms. तो फ्लोरिस्टिक किंगडम्स क्या है? प्लांट्स के बेसिस पर बायोजोग्राफिक रीजन्स को आइडेंटिफाई करना. ठीक है, इसी तरह से दे हैव आस्क्ड ऑन द फॉनिस्टिक, और वी ऑल्सो कॉल इट एज द जू geographical regions. Like for example, if you look into the PYQs, you will be finding once a question was asked, adaptation of animals in the in the Ethiopian realm. पूछा ये. So again, it was, this question was from here. या फिर एक बार क्वेश्चन पूछा है यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नोटोजियान रियाम. तो नोटोजियान बेसिकली क्या है? इट इज द ऑस्ट्रेलियन रीजन. ठीक है, एंड दैट इज फ्रॉम द कैरेक्टर्स perspective of what? This phonistic regions. So again they have asked various such type of questions in the past. Particularly इस तरह के questions का पूछना जो था, it became more if you talk about dominant between 2009 से लेकर के 2018 तक इस तरह के difficult questions पूछे गए हैं.
उसके बाद बायोज्योग्राफी में थोड़ा सा चेंज आया है. द टाइप ऑफ क्वेश्चन दे हैवंट बीन आस्किंग दिस वन, बट I am very well certain that even if they haven't asked, okay, they can ask any time, because UPSC में अगर if you have looked into the questions how they ask, it is like a fashion की तरह. तो फैशन में क्या होता है? फैशन इज ऑलवेज साइक्लिक. तो आज जो चीजें फैशन में हैं कुछ टाइम के बाद नहीं होंगी, बट फिर कुछ टाइम के बाद वो क्या होगा? फैशन रिवाइव हो जाएगा. तो सेम थिंग हैपेंस इन द क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड इन यूपीएससी. सो दे विल आस्क सर्टेन कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, फिर उसके बाद काफी टाइम तक वो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते. एंड अगेन व्हाट विल हैपन? दे विल अगेन रिवाइव इंटरेस्ट इन दोस टॉपिक्स, दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. So directly from the perspective of the examination, we have to be very well aware of this. But another very important thing is, I always say this, knowledge is never harmful. ठीक है, अगर मुझे कॉमन पैटर्न्स बायोम्स पढ़ने के साथ साथ और भी नॉलेज मिल रही है उन बायोम्स के बारे में कि वहां पर क्या क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं, तो इट कैन नेवर बी हार्मफुल. इट कैन बी इनफैक्ट यूज. सपोज जैसे मैंने अभी तुम्हें एक जो एग्जाम्पल बताया क्वेश्चन का, यूनिकनेस ऑफ द यूरेशियन स्टेपी बायोम. सपोज मैंने बायोम्स पढ़ा होता और साथ में मैंने ये भी पढ़ा होता, कैन आई से कि मुझे पता होता कि व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ द यूरेशियन स्टेपी बायोम. कुछ इंपॉर्टेंट जो प्लांट स्पीशीज हैं उनके नाम लिख सकता था, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकता था, एनिमल स्पीशीज की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकता था. ठीक है ना? So it will always be useful. So that is basically the main focus topic, traditional biogeography. This is a topic which is lengthy, and because you can understand कि factors की जब हम बात करते हैं तो factors alone they can take one class itself. ठीक है? फिर when you talk about biomes itself can take 1 to 2 classes. And then there is floristic kingdoms, faunistic regions. So again, this is a topic which will require little bit of time, and it is very exhaustive. Then there is a third category of topic in biogeography, which I simply call it as applied biogeography. So अगर मैं applied biogeography की बात करूं तो you can see आज की डेट में वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग इज द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड द रिलेटेड कंजर्वेशन मेजर्स. एंड वन ऑफ द कंजर्वेशन मेजर्स, यू नो, इट इज रिलेटेड विथ द फिनोमेना ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री. ठीक है, कंजर्वेशन से ही रिलेटेड एक कंसेप्ट रिसेंट टाइम्स में आया है विच इज रेफर टू एज द major gene pool centers. ठीक है, so all of these topics are part and parcel of applied biogeography. ठीक है, बट हम बायोजोग्राफी में जो यहां पर पढ़ने वाले हैं, our focus will be on these two, the pedology and the traditional biogeography पर ही हमारा फोकस होगा, because the topics which are mentioned in applied biogeography, ये टॉपिक्स जो हैं वो काफी हद तक ओवरलैप करते हैं अगर मैं देखूं अपने एनवायरमेंटल ज्योग्राफी. फॉर एग्जांपल, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक्स मेंशन है, लाइक इन्फ्लुएंस ऑफ मैन ऑन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ग्लोबल एंड रीजनल इकोलॉजिकल चेंजेस एंड इम्बैलेंसेस. तो टेल मी, जब मैं ग्लोबल एंड रीजनल इकोलॉजिकल चेंजेस एंड इम्बैलेंसेस की बात कर रहा हूं, so can I say कि I will also talk about one of the change which has taken place is deforestation? Yes or no? So again, that topic is nothing but it is simply overlapping topic. So we'll not spend time here within biogeography. When we will come to this topic of environmental geography, तो हम उस टॉपिक को यहीं पे करेंगे. ठीक है, इसी तरह से बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. जब मैं बायोडाइवर्सिटी की बात करता हूं, can I say I will essentially talk about biodiversity, conservation of biodiversity. I will always talk about the major gene pool centers.
वो वहां का टॉपिक है एक्चुअली, बिकॉज यू माइट बी अवेयर when we are talking about biodiversity we talk about three type of biodiversity. कौन कौन से होते हैं? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी. ठीक है. So again, this is another topic which is more related with what is mentioned. It has overlapping with the environmental geography part. So such topics what we will be doing will not take up today, will not take up with biogeography, will take up with environmental geography. In fact, social forestry, agroforestry is for example another topic which we will be covering with paper 2. And you can see paper 2 में agriculture में एक topic mention है, एग्रो एंड सोशल फॉरेस्ट्री. ठीक है. सो वहीं पर हम वर्ल्ड और इंडिया दोनों का एक साथ कर लेंगे. सो दैट इज बेसिकली हाउ वी आर गोइंग टू कवर दिस टॉपिक ऑफ बायोजियोग्राफी. दैट मीन्स आवर मेन फोकस विद इन द टॉपिक ऑफ बायोजियोग्राफी विल बी दीज टू, पेडोलॉजी एंड द ट्रेडिशनल बायोजियोग्राफी. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. तो अभी किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है अबाउट द वे वी आर गोइंग टू मूव? You can ask now or I will start with the topic of soil. ठीक है. So अगर मैं start करूं soil, okay. So if I just talk about soil, soil science is referred to as the pedology. So here we will be talking about number of things and we will see. First we'll talk about important things like what is soil. What is soil? We will talk about the general characteristics of the soil. And when we are talking about what is soil, तो इसके साथ साथ एक और चीज हमें बात करनी चाहिए. इनफैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज द सॉइल प्रोफाइल. ठीक है. सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हेन वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज सॉइल. Then if you talk about another thing, once we are done with this topic, then we will talk about another topic, that is factors affecting soil formation. इसमें भी हम देखेंगे दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव. ठीक है. सो देखेंगे टोटल 5 फैक्टर्स होते हैं. आई लेटर इलैबोरेट ऑन दिस. देन वंस वी आर डन विद दिस, देन वी विल बी इन अ पोजीशन टू बेटर अंडरस्टैंड द soil forming processes. So variety of soil forming processes हम देखेंगे. And once we have understood the soil forming processes, then we will be in a position to better understand the classification of soils. Classification of soils. और इसमें भी हमारा मेजर फोकस किस पर रहेगा? आवर फोकस वुड बी ऑन मार्बट्स क्लासिफिकेशन. वाई मार्बट्स क्लासिफिकेशन? ऑल्दो आज के टाइम में इसकी अप्लाइड यूटिलिटी नहीं है, बिकॉज ट्रेडिशनली दिस इज द क्लासिफिकेशन फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. आज के टाइम में एक improved classification आ चुका है, and which is actually which has very high applied utility. ठीक है.
और इसको हम बोलते हैं USDA क्लासिफिकेशन. So United States Department of Agriculture. In fact, it is also referred to as soil taxonomy. So this classification is also referred to as the soil taxonomy. So that is another classification. We will give a reference to this classification because suppose करो कि question पूछता है critically examine the Marbert's classification. ठीक है, तो जब मैं critically examine कर रहा हूं Marbert's classification को, can I say कि मैं उसमें shortcomings बताऊंगा? And our answers have to be always suggestive. And हम हमेशा कैसे कर सकते हैं? कुछ suggestions देकर के. So इस पे improvement is what? It is the USDA classification. So we can always give reference in our conclusions which will improve our answers essentially. ठीक है? So classification of soils is the main topic which we will be talking about. Beside definitely the topic of soil erosion, degradation and conservation measures. ठीक है, so these are the 5 major topics which we have to cover here. There is another topic, soil relationship with agriculture. ठीक है, ये टॉपिक मैं कहां पर पढ़ाऊंगा? I take this topic in general with physical setting, that is paper 2 में. ठीक है, so वहां पर भी हमें सॉइल पढ़ना है, इंडिया के सॉइल्स. ठीक है, so मैं ज्यादा बेटर रिलेट कर पाऊंगा there. So if we talk about first, what is soil? Anyone? What is essentially a soil? क्या होता है सॉइल? कोई बता सकता है? ओके, अगर मैं सॉइल को देखूं तो सॉइल कैसा दिखता है? ये जो अपर लेयर है, yes or no? This is referred to as the soil. तो अगर मैं केवल जो दिख रहा है उसके बेसिस पर ही कुछ चीजें निकालने की कोशिश करूं तो आई कैन फाइंड, कैन आई से फर्स्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड विच आई कैन थिंक ऑफ इज इट द अपर मोस्ट layer? Yes or no? It is the uppermost layer of earth surface. And soil की एक खास बात क्या होती है? It is made up of unconsolidated. Yes or no? ये rocks नहीं बने, in fact rocks break हुई हैं pieces में, and through that the soil has been formed. So it is essentially what? It is unconsolidated layer. इसके अलावा सॉइल में अगर हम बात करें और क्या हो सकता है? कैन आई थिंक ऑफ द कंपोनेंट्स विच कैन बी प्रेजेंट इन द सॉइल्स? तो अगर मैं सॉइल के कंपोनेंट्स की बात करूं तो कैन आई से एक कंपोनेंट जो होगा वो होगा एबायोटिक. ठीक है, विच आर बेसिकली वेरियस sediments, minerals which are present in the soil. And can I say that there can also be biotic association? But can I say कि ये biotic जरूरी नहीं है कि हर जगह पर मिलेगा. For example, कई जगह पर if I look into places,
where there is presence of sandy soil. So in sandy soil, is it possible that the biotic material can be missing? Yes or no? That is also a soil. तो कैन आई से कि मैं इन कीवर्ड्स के बेसिस पर सॉइल की एक डेफिनेशन बना सकता हूं? यस और नो? So can we think of, suppose if I have to write a definition, I can think of something like this. I can say soil is the uppermost unconsolidated layer of the Earth's surface which may or may not contain biotic associations. May or may not contain the biotic association. So something like this, obviously, we can think of the soil. Other definitions you can see. Soil is the dynamic layer in which complex chemical, physical and biological activities are going on constantly. ठीक है? Soil becomes adjusted to the conditions of climate, landform and vegetation and will change internally when those controlling conditions change. ठीक है? तो you must have got this material actually. I think it is handy. Okay. So here see, this is the material that you have got. Soil is the upper weathered layer of the earth's crust. It is a dynamic entity which is always undergoing physical, chemical and biological changes. Okay. The word soil is derived from Latin word solum, which means earthly material in which plant grows. Okay. So this is what we mean by soil. The soil is also defined as an unconsolidated layer formed from lithological, that is varying rocks by weathering agencies, which is modified by many organic and biochemical processes. The vertical section through the upper crust of the soil of the earth, it is referred to as the soil profile. Okay. So this is what we mean by the soil. अब soil की बात करें तो soil में बहुत सारी चीजें मिलती हैं हमें. Like soil is made up of solid material, जो अभी हमने बात किया, which can be organic, that is biotic or abiotic. There can also be presence of water within the soil. You know, we call it as soil water. And soil water देखेंगे हम, it is a complex chemical solution which can be present in the soil, the source of which can be precipitation or runoff, seepage and even the groundwater. You know that soil, not all of the soil, the spaces between the soil will contain water. It can also be empty. That means there would be presence of air within the soil. So the pore spaces within the soil, they will be either filled with air or the water. Okay. So all these three are found within them.
So that is what we are calling it as the soil. To further understand this topic of soil, we have to look into some general characteristics of the soil. तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं. So number of general characteristics of the soil we can think of. One important thing, अगर मैं soil को देखूं तो मुझे जो सबसे पहली चीज दिखाई पड़ेगी वो क्या होगा? उसका कलर. ठीक है. So first very important characteristic is the soil color. So soils can display variety of colors depending upon the components which are found in the soil. So one of the very common type of color which we can find of the soil is the black. So variety of colors can be present like the black color. So in general, फिर से मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, इन जनरल ब्लैक कलर जब भी होगा तो इट इज इंडिकेटिव ऑफ व्हाट? इट इज इंडिकेटिव ऑफ एक्सेस ह्यूमस. ठीक है. ह्यूमस क्या होता है बाद में देखेंगे. इट इज अ डीकंपोज्ड ऑर्गेनिक मटीरियल. ठीक है. एक प्रोसेस होता है ह्यूमिफिकेशन. तो देयर आर सम ह्यूमिफाइंग बैक्टीरियाज जो प्लांट से लीव्स गिरता है या फिर जो एनिमल्स लिटर करते हैं. तो दैट थिंग इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? इट इज गेटिंग डीकंपोज्ड बाय दीज बैक्टीरियाज and it converts into a black substance which is referred to as humus. ठीक है. So when there is color of the soil becomes black, it is indicative of that there is excess of organic matter, particularly humus in the soil. ठीक है. हालांकि कभी कभी ब्लैक कलर कैन ऑल्सो बी रिजल्ट ऑफ अदर फैक्टर्स. ठीक है. हम देखेंगे कि जो वर्ल्ड में हमें ब्लैक सॉइल मिलता है वो किस लिए ब्लैक है? क्योंकि उसमें एक्सेस ह्यूमस है. बट यू माइट हैव ऑल्सो हर्ड अबाउट ब्लैक सॉइल ऑफ इंडिया. सुना है? कहां पर मिलता है? इट इज फाउंड इन डेक्कन प्लेटो. देखो एक जेनरिक टर्म, डेक्कन प्लेटो के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं. डेक्कन प्लेटो जो है इट ऑल्सो इंक्लूड्स महाराष्ट्र प्लेटो, इट ऑल्सो इंक्लूड्स कर्नाटका प्लेटो. ठीक है. तो डेक्कन प्लेटो देखेंगे बाद में कि इट इज अ जनरल टर्म. मोर स्पेसिफिक टर्म वी कैन यूज इज द महाराष्ट्र प्लेटो. ठीक है. या फिर हम उसको बोलते हैं डेक्कन बसाल्ट प्लेटो. सो ब्लैक सॉइल इंडिया में भी मिलता है. बट जब हम महाराष्ट्र के सॉइल को, ब्लैक सॉइल को पढ़ते हैं, वी फाइंड दैट द ब्लैक सॉइल देयर इज नॉट रिजल्ट ऑफ द एक्सेस ऑफ ह्यूमस. इनफैक्ट उस सॉइल में ह्यूमस की थोड़ी कमी होती है. तो बाद में देखेंगे कि वहां पर जो ब्लैक सॉइल मिल रहा है इट इज नॉट रिजल्ट ऑफ ह्यूमस बट इट इज रिजल्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ मिनरल बाय द नेम ऑफ टिटानिफेरस मैग्नेटाइट. ठीक है. और उसकी वजह से वहां पर क्या होता है? सॉइल का कलर ब्लैक हो जाता है. बट बिकॉज वी आर स्टडिंग हियर फ्रॉम द पेपर वन पॉइंट ऑफ व्यू, इन जनरल व्हेन द सॉइल कलर इज ब्लैक इट इज रिजल्ट ऑफ व्हाट? इट इज रिजल्ट ऑफ मच ह्यूमस. और इन जनरल ये कौन से क्लाइमेट्स में मिलता है? कूल क्लाइमेट्स में जहां पर टेम्परेट ग्रासलैंड्स मिलती हैं. और टेम्परेट ग्रासलैंड्स हमें कहां पर मिलती हैं? यू हैव स्टडीड अबाउट क्लाइमेटोलॉजी. तो ये कहां पर मिलती हैं? किस तरह के क्लाइमेट में? स्टेपी क्लाइमेट में. ठीक है. Then when the color is light, it is depictive of the fact that there is very limited humus in the soil. And in general, such is characteristic where? In the deserts. You know, deserts mein there is scarcity of vegetation particularly, and because of that there is very limited organic material in the soil. ठीक है. एक और चीज देखेंगे कि व्हेन द कलर ऑफ द सॉइल इज लाइट, ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी
This light color, एक we are saying that there can be absence of humus, ठीक है. It can also be result of excess of silica, ठीक है. तो जहां पर सिलिका का एक्सेस होगा वहां पर भी क्या हो जाएगा, सच काइंड ऑफ लाइट कलर कैन बी फाउंड. इनफैक्ट ये दोनों कॉम्बिनेशन में होते हैं. लाइक एक्सेस ऑफ सिलिका की अगर हम बात करें तो यू हैव स्टडीड अबाउट वन एरिया, टैगा फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा है, टैगा रीजन, ठीक है. इनफैक्ट जहां पर टेम्परेट फॉरेस्ट मिलते हैं वहां पर हमें क्या मिलेगा, वहां पर वी विल बी फाइंडिंग देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यू टू विच द सॉइल विल बिकम, और द अपर मोस्ट सॉइल, द टॉप सॉइल जिसको हम बोलते हैं, इट वुड बिकम एक्सेस इन सिलिका, ठीक है. तो इस तरह के सॉइल को हम बोलते हैं पॉडजोल सॉइल. ये सब बाद में आएंगे टर्म्स, आई एम जस्ट गिविंग अ रेफरेंस. तो दिस लाइट कलर कैन ऑल्सो बी रिजल्ट ऑफ व्हाट, एक्सेस ऑफ सिलिका. इनफैक्ट ये जो लाइट कलर है पर्टिकुलरली इसमें कलर कैसा हो जाएगा, ऐश ग्रे, ठीक है. So that is another type. Then you know one common type of soil is the red color soil. So red color soil जहां पर भी हमें मिल रहा है, it is indicative of the presence of ferric oxide, ठीक है. यानी कि जो सॉइल है, टॉप सॉइल पर्टिकुलरली, उसमें आयरन is in excess and this iron has been oxidized to its ferric form. तो जो फेरिक ऑक्साइड होता है उसका कलर कैसा होगा, रेड होगा. तो thus the soil will also appear to be reddish. Then some soils can also appear to be bluish greenish color, ठीक है. Particularly they can also be grayish, because you know when you mix black with blue or green it will develop a kind of grayish tint. So ये कहां पर होगा, this type of color of the soil will be very common in swamps, ठीक है. तो swamps में हमें क्या कंडीशन मिलती है, we find that there is development of anaerobic conditions. एनारोबिक कंडीशंस में क्या मिलता है हमें, लैक ऑफ ऑक्सीजन. और अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो कैन आई से दिस फेरिक ऑक्साइड विल बी कन्वर्टेड टू फेरस फॉर्म, इट विल बी रिड्यूस्ड टू फेरस फॉर्म. तो जो फेरस ऑक्साइड होता है उसका कलर कैसा होता है, इट इज ब्लूइश ग्रीनिश, ठीक है. सो एनारोबिक कंडीशंस में व्हाट वी फाइंड, देयर इज लैक ऑफ oxygen due to which the iron is reduced to ferrous oxide, which gives this kind of color to the soil, ठीक है. I hope it is clear. So again you can understand that the color of the soil will tell us about many of the important characteristics of the soil. Then another important characteristic is the soil texture. Soil texture. तो अगर हम सॉइल टेक्सचर की बात करें, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सचर फॉर द सॉइल, क्या सिग्निफिकेंस होगा टेक्सचर का. टेक्सचर का मतलब क्या है, सॉइल यू नो इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स,
So the size of the particles is essentially the texture of the soil. ठीक है? The texture of the soil, it determines the water retentivity of the soil. Water retentivity of the soil. ठीक है? So in fact, soil texture, if you talk about, it is inversely proportional to water retentivity. That means coarse textured soils would have less water retentivity and fine textured soils will have higher water retentivity. ठीक है? Why it is so? Why this relationship, if you talk about, is inverse? तो एक चीज हमें समझनी होगी कि जो सॉइल मॉइस्चर होता है, it always attaches as what? As film to the soil surface. ठीक है? It clings to the soil surface. जो soil particles हैं उसके surface पे it clings to that. ठीक है? So now tell me, suppose मेरे पास एक soil texture ये है, अगर मैं इसको ब्रेक करके छोटे छोटे फाइनर पार्टिकल्स में चेंज कर देता हूं, नाउ टेल मी which one has a greater surface area, A or B? B will have a greater surface area. ठीक है? And definitely the higher the surface area, that means greater will be the water retentivity. ठीक है? So always remember that fine textured soils have higher water retentivity. ठीक है? तो अगर हम टेक्सचर की बात करें तो this is, you can see various type of textures are given. So one type of texture is gravel. So here we are talking about diameters in millimeters. If you want, you can write down name of the grade and the diameter in millimeters. इसको हम एक कर सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं gravel texture. ठीक है? एंड ग्रेवल टेक्सचर क्या होगा? कैन आई से इसको जनरल बोल सकते हैं, कैन वी कॉल इट एज अबव 1 millimeter, because fine gravel is 1 millimeter to 2 and coarse gravel is above 2 millimeter. Then there is the second type of texture which is referred to as sandy texture. ठीक है? तो सैंडी टेक्सचर you can very well see ये कहां से कहां तक हो सकता है. It can range between 0.05 से लेकर के 1. So it can be between 1 millimeter. ठीक है? Third very important structure is the silty structure. ठीक है? Obviously you can see that silt is 0.002 to 0.05 and the finest is the clay. So it is referred to as the clay structure, which is below 0.002. ये पीपीटी अपलोड होगी, बट फिर भी हमेशा लिखना बेटर होता है. Okay, so these are the 4 type of textures that we talk about. Now अगर हम सबसे कॉमन सॉइल्स की बात करें तो उन में 3 तरह के टेक्सचर्स आर द डोमिनेंट टेक्सचर्स, सैंडी, सिल्टी एंड
क्ले। ठीक है, इसके बेसिस पर वी टॉक अबाउट वेरियस टाइप ऑफ such kind of textures. So you can see that here we are talking about the percentage of for example clay इधर बढ़ता जा रहा है, percentage of sand इधर बढ़ता जा रहा है, percentage of silt इधर बढ़ता जा रहा है. अब उसके basis पर we can talk about various type of textures which are there. Like for example, you see this is the various type of soil textures. So for example, one type of texture is sandy loam. And what is essentially found in the case of sandy loam? 65% of the content is sand, 15% content is the clay, and 20% content is the silt. Similarly, there can be clayey loam where one third, each of them are found. Then there is a loamy texture. In loamy texture, you can see 40% is sand, 18% is clay, 42% is silt. ठीक है, there is silty clay, there is silt loam. ठीक है, so different type of textures are result of the various mixtures of these three type of basic textures which are found in the soil. ठीक है, loamy soil is the one which is considered very good for agriculture. Now you can also understand, depending upon the type of crop that we are talking about, different type of soil can be more useful. For example, can you understand that certain crops require too much of water, like for example rice. ठीक है, ये sugar cane. तो particularly अगर हम rice की बात करें, jute is another crop which requires lots of water. तो can I say कि ऐसे crops के लिए silty clay, clayey loam, ये textures क्या है, बहुत फाइनर है, जिसमें silt और clay की मात्रा क्या है. Like for example, जब मैं silty clay की बात कर रहा हूं तो silt और clay बहुत ज्यादा है इसमें. And does this means that the water retentivity of these soils will be very high? So again, they will be very useful for such type of crops. ठीक है, so very clearly the texture of the soil वो क्या करता है, it determines the water retentivity, and thus it is very important factor when it comes to agriculture. Then another important characteristic is referred to as soil structure. सॉइल स्ट्रक्चर, तो यहां पर देख सकते हो जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से लूज होंगे. दे विल नॉट बी फुल्ली लूज, दे विल इन फैक्ट फॉर्म एग्रीगेट्स और लम्प्स. ठीक है, एंड दीज एग्रीगेट्स और लम्प्स विल शो वेरियस टाइप ऑफ शेप्स. लाइक यहां पर देख सकते हो ब्लॉकी हो सकता है, प्रिस्मेटिक हो सकता है, प्लेटी हो सकता है, या फिर क्रम्बी स्ट्रक्चर हो सकता है. ठीक है, so if you want you can write individual soil particles aggregate together in lump or beds. In lump or beds, which is referred to as soil structure. ठीक है, अब सॉइल स्ट्रक्चर का क्या रोल है, ये सॉइल स्ट्रक्चर कैसे ये एग्रीगेट हो जाते होंगे. सॉइल में बहुत सारे कंपोनेंट्स मिल सकते हैं विच कैन बिहेव एज सीमेंटिंग एजेंट्स. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल एक कॉमन सीमेंटिंग एजेंट क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर. तो ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, जो सॉइल के इंडिविजुअल पार्टिकल्स होंगे उनको बाइंड करके रखेगा, एंड दस
Due to this binding, they will form these kind of lumps or beds. And essentially, that is how they are present. So, what essentially determines इससे क्या फर्क पड़ेगा? You can understand soil थोड़ा सा compact हो जाएगा, loss of soil कम होगा, soil erosion कम होगा, ठीक है. In fact, it also determines agriculture के point of view से ease of cultivation, ठीक है. So the soil structure determines the ease of cultivation. Crumbly structure is considered best for seed germination. ठीक है. Okay, so that is essentially the soil structure. Then there is soil colloids, which determines the acidity or the basic characteristics of the soil. ठीक है. So जो soil में colloids होते हैं, colloids are basically what? These are very fine particles. These colloids can be of two origin. ठीक है. They can be inorganic and they are essentially the clay minerals, or they can be organic. Essentially they are then the humus. ठीक है. सो जो क्ले मिनरल्स होते हैं, these if you talk about, they are negatively charged. So these are neutralized by attraction to their surface positively charged ions, ठीक है, और जिसको हम कहते हैं cations of minerals. ठीक है. So essentially calcium, magnesium, potassium, sodium, that is basically the basis. ठीक है. So tell me, clay minerals कैसे होंगे? They are very fine particles. Humus is also very fine particle. ठीक है. तो अगर सपोज करो कि सॉइल में बहुत ज्यादा इनफिल्ट्रेशन हो रहा है, there is an area where there is lots of rainfall taking place and there is lots of infiltration going on. Can I say कि ये जो colloids होंगे, will these colloids be removed? Yes or no? अगर बहुत सारा इनफिल्ट्रेशन हो रहा है तो जो फाइनेस्ट पार्टिकल्स हैं, कैन दे गो आउट along with that infiltrating water? Yes or no? ठीक है. बाद में देखेंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं एलुविएशन. ठीक है. एंड व्हेन दे गो इन अ डिसॉल्व्ड फॉर्म, दैट इज लीचिंग. So they can be leached out or they can be eluviated. तो अगर ये negatively charged particles निकल गए, colloids निकल गए, can I say they won't be there to attract these positively charged cations? Yes or no? That means these bases will also be removed. There will be lack of bases. And if there is lack of bases, what will happen to the pH of the soil? It will get acidic. The pH will reduce. ठीक है. और इस तरह के सॉइल में ये इंपॉर्टेंट बहुत सारे जो मिनरल्स हैं वो क्या होंगे? They will be lost. The soil will become less fertile. It will become poor. ठीक है. Infertility. So again, that is basically the very important rule. So again, these positively charged cations, if you talk about, of these minerals, these are calcium, magnesium, potassium and sodium. So these are basically your bases. So bases are recycled to the soil by decomposition of plants and animals. ठीक है.
For agriculture purposes, bases can be replenished by artificial supply through the fertilizers. ठीक है, these are essential for as nutrients for the plant growth. ठीक है, so depending upon that, the pH of the soil is determined. ठीक है, so if you talk about pH of the soil, ठीक है, so tell me, अब मैं एक सिंपल सा लॉजिक की बात करता हूं. एक तरफ अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं मॉइस्चर रिजीम, सपोज, ठीक है, ऑन वन साइड देयर इज ह्यूमिड, ऑन वन साइड देयर इज ड्राई. ठीक है, नाउ टेल मी किस तरफ पीएच कम होगा और किस तरफ पीएच ज्यादा होना चाहिए. ह्यूमिड की तरफ क्या होगा, पीएच ज्यादा होगा या कम होगा. दिमाग लगाओ दिमाग. अभी हमने क्या बोला, अगर बारिश ज्यादा हो रही है, इनफिल्ट्रेशन ज्यादा हो रहा है, दैट मीन्स कोलॉइड्स आर बीइंग मोर रिमूव्ड, and if there is lack of colloids, they will not be able to attract the bases. Colloids क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं. ठीक है, so they are attracting the positively charged cations to their surface. That means they are binding those positively charged cations, bases. So अगर colloids निकल गए तो there is no such thing which will bind these bases. Yes or no? So that means here when we are talking about, there will be lower pH, and on this side what will happen? There will be higher pH. ठीक है, that means this side it will be more basic, this side it will be more acidic soils. ठीक है, नहीं ऐसा नहीं था. ठीक है, सो हम बाद में देखेंगे. अभी हमने, बिकॉज आई विल कम बैक टू दिस पॉइंट लेटर ऑन, ये चार्ट, बिकॉज वी हैवंट स्टडीड द टाइप ऑफ सॉइल्स अभी. ठीक है, बट एक जनरल टर्म मैं बता देता हूं. ठीक है, हम देखेंगे कि जब हम सॉइल्स को क्लासिफाई करेंगे तो वी विल क्लासिफाई द सॉइल्स ब्रॉडली इनटू टू टाइप्स. ठीक है, one type of soil we will call them as pedalfers, and other type of soils we will call them as pedocalcs. ठीक है, तो pedalfers कौन से सॉइल होते हैं? They are soils of humid climatic regimes. ठीक है, सो हमें pedalfers कहां पर मिलेंगे? On this side. pedocalcs जो होते हैं, they are soils of drier regimes. ठीक है, so at this point of time just remember this. As we move on you'll better understand this. I hope it is clear. तो हमने क्या बोला, हमने बोला there is presence of colloids. colloids की characteristics क्या होती है? They are negatively charged, and since they are negatively charged they attract cations or the bases to their surface, so they bind these bases to their surface. ठीक है, so that ultimately determines the pH. You can understand it is not determining just the pH, but does it also determines the availability of these important nutrients? Yes or no? And thus the fertility of the soil will be determined. Okay,
So that is basically the case of or the significance of these colloids and the pH of the soil. Then we talked about another important characteristic is the soil water. ठीक है, so soil water क्या होता है? It is a complex chemical solution. ठीक है, so soil water is a complex chemical solution. It is a dilute solution of such substances such as there can be presence of bicarbonates, sulfates, chlorides, nitrates, phosphates, and silicates of calcium, magnesium, potassium, sodium, and iron. Many things can be found. In simple terms, it is a complex chemical solution. ठीक है, and we have talked about that the soil water clings to the surface of the soil. ऑब्वियस सी बात है, डाइल्यूशन वही होता है. ठीक है, सो इट इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन, इट इज इन डाइल्यूटेड फॉर्म. ठीक है, सो दिस इज वन कैरेक्टरिस्टिक. देन another important characteristic is what we call it as the soil profile. ठीक है, तो soil profile क्या होता है? Soil profile refers to और हम सिंपली इसको कह सकते हैं कि सॉइल कैसे मिलता है. सॉइल इज फाउंड where these layers or horizons are superimposed over each other. ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिखो सॉइल प्रोफाइल का. आई जस्ट एक्सप्लेन इट. Soil is found to be present as soil profile, where or which is a column of soil, which is a column of soil made up of several soil horizons. Soil horizon ब्रैकेट में लिखना है. होराइजन का मतलब यहां पर क्या है? लेयर. Superimposed over each other. Superimposed over each other. So can you see here? Do we find that there is layers, various type of layers which are present, and each of these layers we will see they will have their own characteristic. So here is a general soil profile. ठीक है, सो एक जनरल सॉइल प्रोफाइल की बात करें तो उसमें हमें क्या मिलता है? अ वेल डेवलप्ड सॉइल प्रोफाइल की हम बात करें. देयर कैन ऑल्सो बी एन अंडर डेवलप्ड सॉइल प्रोफाइल. देयर कैन बी सर्टेन सॉइल प्रोफाइल्स विच विल हैव सम यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल, डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको बोलते हैं. बट इन जनरल, in a soil profile, what we find that there is the uppermost layer which is referred to as the O layer. ठीक है, O का मतलब यहां पर क्या है? ऑर्गेनिक लेयर. ठीक है, बिलो द ऑर्गेनिक लेयर देयर इज प्रेजेंस ऑफ A layer. ठीक है, यहां पर A का मतलब क्या है?
It is a mineral layer. Then there is E layer. E layer. E का मतलब यहां पर क्या है? E means एलुविएशन. एलुविएशन, इसको याद रख सकते हो. ई का मतलब क्या होगा? एम्प्टी, यानी कि बाहर निकलना. ठीक है. सो इन फैक्ट वी कैन ऑल्सो कॉल दिस एज व्हाट? इट इज द जोन ऑफ एलुविएशन. ठीक है. ये पूरा ही ए लेयर था है. ठीक है. बट ए लेयर के जो लोअर पार्ट है वहां से ज्यादा एलुविएशन हो रहा है. दैट इज वाई यहां पर एक इन अ वे डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक बन गया, एंड दस वी आर डिवाइडिंग द ए लेयर इनटू ए एंड. देन बिलो दिस लेयर इज द बी लेयर. एक्चुअली I am writing it layer, but you remember as the technical word is horizon. B horizon. So यहाँ पर B horizon, it is essentially illuviation horizon. Illuviation horizon. और यहां पर जैसे यहां पर E का मतलब क्या था? एम्प्टी होना. यहां पर I का मतलब क्या हो जाएगा? इन. So many of the material which was being lost from the upper layer, उस मटीरियल के साथ क्या हो रहा है? इट इज गेटिंग डिपॉजिटेड इन दिस बी लेयर. ठीक है. तो देखेंगे इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इल्यूविएशन. सो दैट इज बेसिकली द बी लेयर. बिलो दिस इज द सी लेयर और सी होराइजन. ठीक है. सो व्हाट इज सी होराइजन? इट इज पार्शियली वेदर्ड. Sea horizon is the partially weathered parent material. Partially weathered parent material. और उसके ऊपर जो है that is soil which is made up of completely weathered material. You know weathering? Weathering क्या होता है? Weathering is a process of disintegration of rocks in situ. In situ means at the same place, either through chemical or mechanical processes. ठीक है. So here there is only partial weathering which has taken place. Complete weathering has not taken place. Below this is the what we call it as the parent material. ठीक है. So parent material is the material which has supplied the inorganic content to the soil. ठीक है. इसी की वेदरिंग से ये सॉइल बना है. अब इसमें when we are talking about these horizons, remember that this is zone of illuviation. This is zone of illuviation. ठीक है. और भी कुछ टर्म्स हैं जो हमें जानने हैं, लाइक this is referred to as the topsoil. That means O, A and E
they together form the topsoil. O, A, E and B, this is what we call it as the true soil, or another term is the solum. That means C is not part of the true soil, it is soil in the making. I hope it is clear. एक जनरल आइडिया अबाउट द सॉइल प्रोफाइल. अब एक एक करके थोड़ा सा डिटेल देखते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं ओ होराइजन की. So as we said, O horizon is what? It is the organic horizon. Organic horizon is divided into three subparts. Is divided into three subparts. So this is our O horizon. So there is first, there is O0, there is O1 and then there is O2. ठीक है. तो O0 क्या है? It is undecomposed leaf and litter. Undecomposed leaf and litter. Then O1 is partially decomposed leaf and litter, and O2 is fully decomposed leaf and litter. In fact, this O2 layer is what? This is what we call it as the humus layer. ठीक है. सो यू माइट हैव सीन, अगर मैं ऐसे एरिया में जाऊं जहां पर बहुत सारे पेड़ वेड़ हैं, तो कैन आई से कि मुझे जमीन पे गिरे हुए पत्तियां दिखाई पड़ेंगी बहुत सारी. तो दैट लेयर इज बेसिकली व्हाट? दैट इज द O0 लेयर. ठीक है. कुछ कुछ जगहों पर हमें यह भी दिखाई पड़ सकता है कि वो पत्तियां जो है वो डीकंपोज हो गई हैं, बट स्टिल हम उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि वो पत्ती थी. ठीक है. इट्स कलर माइट वुड हैव बिकम ब्लैक. ठीक है, जैसे सड़ जाने की तरह हो गया होगा, बट स्टिल इट इज लिटिल बिट रिकॉग्नाइजेबल. सो दैट इज बेसिकली व्हाट? O1. दैट इज पार्शियली डीकंपोज्ड लीफ एंड लिटर. देन अल्टीमेटली देयर इज द ह्यूमस लेयर. ठीक है. सो दैट इज द ऑर्गेनिक होराइजन. अगेन यू कैन अंडरस्टैंड organic horizon, presence of the organic horizon depends upon what? It is very much function of the vegetation. ठीक है. Then there is the A layer या A horizon. So as we said, the mineral horizon. Mineral horizon. So what are the important minerals which can be found in the soil? Number of them can be found. Like one very common type of mineral which is found is silica. ठीक है. Another very important common type of mineral which is found is various bases. ठीक है. Then another type of mineral is
iron and aluminum. What is the characteristic of the A horizon? One of the characteristic of the A horizon is it has suffered from alluviation or लीचिंग. दोनों अलग अलग हैं टेक्निकली, बाद में देखेंगे. एक में कंप्लीट लॉस हो जाता है लीचिंग में. Alluviation is a process in which there is no complete loss because the material is retained in the B layer. So it has suffered from alluviation or leaching. So that is basically the A horizon. Then comes the E horizon. Alluvial horizon. So alluvial horizon क्या है? It is the lower part of the mineral horizon. देख लो इसको. It is the lower part of the mineral horizon which shows excessive alluviation or leaching. Which shows excessive alluviation or leaching. ठीक है. Now tell me, if there is presence of this E horizon, जहां पर excessive loss of material हुआ है, किस तरह का material loss होगा soil से? I'll give you an option. Will the loss of material will be finer particles or the coarser particles? जो सॉइल स्पेसेस हैं उसमें से आसानी से कौन सा निकल सकता है? फाइनर पार्टिकल्स आसानी से निकल सकते हैं. ठीक है. तो अगर इस लेयर से बहुत सारे फाइनर पार्टिकल्स निकल गए हैं, व्हाट डज दिस टेल्स मी? डज दिस टेल्स मी दैट दिस लेयर विल हैव मोर कोर्सर टेक्सचर. ठीक है. सो दिस लेयर, लिख लो इसको, दिस लेयर generally displays coarser texture. ठीक है. तो दैट इज द ई होराइजन. और जनरली जब ई होराइजन प्रेजेंट होगा तो इट इज ऑल्सो इंडिकेटिव दैट सॉइल का पीएच कैसा होगा. ई होराइजन का प्रेजेंट होना क्या दिखाता है? डज इट शोज दैट देयर इज लॉस ऑफ सॉइल, एंड अगर लॉस हुआ है तो पीएच क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बिकॉज बेसिस मस्ट हैव बीन लॉस्ट. ठीक है. कोलॉइड्स, वो फाइनर पार्टिकल्स निकल गए, बेसिस भी निकल गई, तो इसका मतलब जो पीएच है वो लो हो जाएगा. ठीक है. तो दैट इज बेसिकली द ई होराइजन. देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द बी होराइजन. तो बी होराइजन इज द alluvial horizon. Alluvial horizon. So can you understand? बहुत सिंपल सी बात है कि अगर यहां से मटेरियल नीचे की ओर आ रहा है तो इज इट पॉसिबल कि जैसे छन्नी होती है उस तरह से बहुत सारा जो वाटर है विच इज कमिंग वो छन करके द मटेरियल कैन इट बी रिटेन्ड हियर in this lower part, particularly if the material is
not dissolved in the water. ठीक है, लीचिंग जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, अभी हम देखेंगे, उसमें मटेरियल डिसॉल्व हो जाता है. तो इफ द मटेरियल इज डिसॉल्व, कैन आई से कि वाटर के साथ वो निकल जाएगा? देयर इज नो चांस ऑफ इट गेटिंग रिटेन्ड हियर, यस और नो? तो देयर विल बी कंप्लीट लॉस ऑफ दैट मटेरियल. बट देखेंगे कि जो एलुविएशन का प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है, विदाउट डिसॉल्विंग द मटेरियल इज कमिंग along with that water. So in that case there is a chance that it can be filtered out here and it can be retained in this lower part of the soil. ठीक है, so this is essentially what, this is your B horizon. So B horizon, लिख लो इसको, B horizon shows distinction as it contains or as it has experienced, it has experienced the phenomena of illuviation, the phenomena of illuviation, whereby the material being lost from the topsoil is getting accumulated in this layer. ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज द बी होराइजन. ये जो मैंने बात बोली कि यहां से जो मटेरियल आ रहा है फ्रॉम अबव टू डाउन एंड इट इज गेटिंग रिटेन्ड हियर, ठीक है, इट इज एक्यूमुलेटेड हियर. बट कैन आई से कि ये जो मैंने आइडिया बताया, विल दिस आइडिया बी मोर एप्लीकेबल इन ह्यूमिड रिजीम्स? यस और नो? ड्राई रिजीम्स में उल्टा हो रहा है. ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग इन द ड्राई रिजीम्स? ड्राई रिजीम्स में देयर इज दिस सपोज ग्राउंड वाटर टेबल, ठीक है, और यहां पर वाटर, यू नो, देयर इज अ फिनोमेना रेफर टू एज कैपिलरी एक्शन. ठीक है, सो वाटर थ्रू कैपिलरी एक्शन इज राइजिंग अपवर्ड्स. ठीक है, and by the time it reaches this lower part of the soil, ये water क्या हो रहा है, it is getting evaporated. और अगर ये evaporate हो गया, then what will happen? There will be the salts which were contained or which were dissolved in this water, they would precipitate out and they would again be accumulated here in this lower part of the soil. ठीक है, सो एक पॉइंट और लिख लो, द एक्यूमुलेशन ऑफ मटीरियल इन द बी होराइजन कैन ऑल्सो बी रिजल्ट ऑफ capillary action and consequent evaporation and precipitation of salts. Consequent evaporation of water and precipitation of salts. And precipitation of salts in dry climatic regimes. In dry climatic regimes. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बी होराइजन. नाउ मुझे ये बताओ कि चाहे ये जो मटेरियल है, वेदर इट इज कमिंग फ्रॉम अबव और वेदर इट इज कमिंग फ्रॉम डाउन, whatever be the cause, can I say the B horizon would show
excess of finer particles? Yes or no? तो लिख लो इसको, B horizon has excess of finer particles, has excess of finer particles. ठीक है. इनफैक्ट टेल मी कि जब ये एक्सेस बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, सो थिंक करो कि ये लेयर था, ठीक है, इसमें दिस वाज द सॉइल पार्टिकल्स विच वर प्रेजेंट, और इनके बीच में ये स्पेसेस हैं, ठीक है. नाउ थिंक कि जब ये एक्सेस बहुत ज्यादा हो गया, कैन आई से कि ये सारी की सारी स्पेसेस फिलअप हो जाएंगी? इस एक्यूमुलेशन से. एंड इन दैट केस you tell me what will be the characteristic of the soil, what it will become? Will it become impermeable? Yes or no? It will become impermeable. So when this phenomena occurs in excess, what develops here? There is development of hard pans. ठीक है, so लिख लो, when these phenomena leading to accumulation happen in excess, comma, there can be development of hard pans. There can be development of hard pans, making the soil impermeable. Making the soil impermeable. ठीक है, so that is basically what, that is our B horizon. Then as I told you, there is C horizon. So C horizon simple है. What is C horizon? It is the partially weathered parent material which is not considered part of the true soil. ठीक है. तो आई होप सॉइल प्रोफाइल समझ में आ गया. ठीक है, बाद में देखेंगे वेरियस जो क्लासिफिकेशन करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ जो सॉइल्स होंगे उनकी अपनी अपनी प्रोफाइल्स बन सकती हैं. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल हम देखेंगे जोनल सॉइल्स. तो जोनल सॉइल्स कौन से सॉइल्स होंगे? जो बहुत लंबे टाइम तक जिसपे सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस हैव वर्कड. तो दीज आर द सॉइल्स विच आर फुल्ली डेवलप्ड सॉइल्स. तो जब सॉइल्स फुल्ली डेवलप्ड होंगे तो कैन आई से सॉइल प्रोफाइल भी फुल्ली डेवलप्ड होगी. तो उस केस में कैसी सॉइल प्रोफाइल मिलेगी? जैसे अभी हमने बनाई थी. ठीक है, दूसरे टाइप के सॉइल्स हम देखेंगे ए जोनल सॉइल्स. ए जोनल सॉइल्स वो सॉइल्स होते हैं जिसपे बहुत कम टाइम तक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस ऑपरेट हुए. सो इन दैट केस सॉइल प्रोफाइल कैसी होगी? कैन आई से कि सॉइल प्रोफाइल बहुत थिन होगी. And is it possible that many of these layers may be missing? They wouldn't have been formed. ठीक है, so that is basically what we mean by the soil profile. Because if you have seen the PYQs, you might have seen एक बार क्वेश्चन पूछा गया है difference in the soil profile of zonal and azonal soils. But we cannot understand that till we have studied the zonal and azonal soils. ठीक है, so that is the soil characteristics and the soil profile. अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन.
factors affecting soil formation. So as we have seen, there are two types of soil forming factors. One is the active soil formers, and the second one is the passive or inactive soil formers. ठीक है. सो जो एक्टिव सॉइल फॉर्मर्स होते हैं, दे आर टू टाइप्स. वन इज द क्लाइमेट and second, if you talk about, is the biota. ठीक है. So one is the climate and second one is the biota. Passive soil formers include, one important is the parent material, second, in fact, the second one is the topography, and the third passive type is the factor of time. ठीक है, ये सब मटेरियल में लिखा हुआ है. ओके, तो एक एक करके आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट क्लाइमेट. And its role in soil formation. Climate and its role in soil formation. And I will give you, because you have little bit or you have studied about climatology. ठीक है. I'll give you 2 minutes. Think करो कि अगर सपोज करो कि ये क्वेश्चन अचानक से एग्जाम में आ जाता तो क्या लिख सकते थे. दिमाग लगाओ, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो. Climate and its role in soil formation. Okay. Climate can play a very important role in soil, determining the characteristics of the soil formation. So अगर मुझे think करना है तो एक तरीका think करने का हमेशा होता है, we can think from the perspective of direct role which is played by the climate and indirect role which is played by the climate in determining the soil and its characteristics, soil forming processes. So directly, number of ways. Soil formation के बारे में अगर मैं सोचूं और soil characteristics के बारे में सोचूं, तो tell me, can I say कि soil formation में दो पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हैं. एक accumulation of soil material और दूसरा क्या होगा, सॉइल मटेरियल एक्यूमुलेट होने के साथ साथ डिफरेंशिएट भी हो रहा है होराइजन्स में. यस और नो. तो कैन आई से क्लाइमेट डिटरमाइंस बोथ द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल मटेरियल as well as differentiation of soil horizons. So what it is doing, directly it
determines both the accumulation of soil material as well as differentiation of soil horizons, as well as the differentiation of the soil horizons. So accumulation of soil material की बात करें सबसे पहले, how it is determining the accumulation of soil material? Primarily through the process of weathering. ठीक है, so this one, first one, it is done primarily through the process of weathering. Climatic parameters, can we say they directly determine the intensity as well as type of weathering? Yes or no? So climatic parameters like temperature and moisture regimes directly determine the type as well as intensity of weathering. ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है, सपोज करो कि कोई ऐसा रिजीम है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि सपोज मैं बात कर रहा हूं ड्राई रिजीम, ठीक है, सो कैन आई से कि ड्राई रिजीम में देयर विल बी लेस वेदरिंग टेकिंग प्लेस. ठीक है, ड्राई रिजीम्स में बिकॉज वाटर की कमी है और वाटर की कमी होने की वजह से क्या होगा, देयर विल बी लेस केमिकल वेदरिंग टेकिंग प्लेस, इवन फिजिकल वेदरिंग विल बी लेस. तो ऐसे केस में जो सॉइल होगा, कैन वी से इट विल डेवलप कोर्स टेक्सचर. यस और नो? उसका टेक्सचर कोर्स हो जाएगा, और अगर उसका टेक्सचर कोर्स हो जाता है, ऑब्वियसली उसमें अदर फैक्टर्स लाइक मॉइस्चर रिटेंटिविटी इट विल बी लोअर. ठीक है, तो अगेन दैट इज द केस. सो इट इज डिटरमाइनिंग इन दिस वे. सेकेंड, differentiation of soil horizon. Again we know temperature and moisture regimes determine the movement and direction of water and minerals. Movement and direction of the water and minerals in the soil. Determine the movement and direction of the water and minerals in the soil. So हमने देखा था कि अगर ह्यूमिड रिजीम है तो ह्यूमिड रिजीम में मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स किधर से किधर की तरफ होता है, फ्रॉम टॉप टू डाउन. यस और नो? इन ड्राई रिजीम्स इट वाज फ्रॉम बॉटम टू अप. So again it is determined by what? It is determined by the climate. ठीक है, सो एक कंक्लूजन यहां पर हम ये कर सकते हैं, कैन वी से, इनफैक्ट उसको लास्ट में भी कर सकते हैं, फर्स्ट इनडायरेक्ट भी बता देता हूं. इनडायरेक्टली कैसे डिटरमाइन करेगा? एनीवन? हाउ क्लाइमेट इज इनडायरेक्टली डिटरमाइनिंग द सॉइल? Can we say indirectly will it determine through vegetation? Yes or no? So climate indirectly determines the soil through vegetation. Through vegetation. अगर मैं सपोज करूं कि इसको एग्जाम में लिख रहा हूंगा तो एक कंक्लूजन हो सकता है मेरा कि the relationship between climate and the soils is so much strong
that if we take the map of climatic types and superimpose the map of soil types, there will be almost a match. ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो you know that there is here tropical rainforest. ये डायग्राम पढ़ा है. There is tropical rainforest 0 to कहाँ तक 10 degree, then 10 to 30 degree. There is here tropical monsoon. There is savanna, and there is the tropical subtropical desert. ठीक है, then there is almost 30 to 40 degree. We find that there is China type, there is the steppe, there is Mediterranean. Then there is 40 to 60 degree. Here there is Laurentian, there is Taiga, and then there is British type. 60 to 80 degree is tundra, and then there is the presence of ice caps. This is the general diagram of the climatic types. ठीक है, हम देखेंगे कि if you talk about the soils, there is almost a match. Like tropical rainforest, monsoon. ठीक है, ये अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा. Just अभी इसको बना करके लिख लो. When we'll talk about the type of soil, then I'll explain. Here we will find there is presence of latosols or the red soils. ठीक है, this is also what latosols or the red soils would be found. Here a degraded version of this grumosols. ठीक है, here what we will be finding the desert soils. Here we will be finding that there will be presence of black soils. In fact, you know steppe के बीच में भी mid latitude deserts होते हैं. So there you will be finding here in between we will be all again finding what desert soils. जिसको I am just here S writing. So S means what? Xerizem soils. ठीक है, but outside that it's what? In rest of the steppe it is black soils. ठीक है, ये black soils को एक टेक्निकल नेम से हम बाद में बोलेंगे. We are calling it as the Chernozem soil. ठीक है, तो ये जो black soil है it is also referred to as the Chernozem soils. मेडिटेरेनियन और चाइना टाइप में क्या होता है? ट्रांजिशन क्लाइमेट्स हैं. ठीक है, तो इसमें सॉइल का भी ट्रांजिशन होता है. तो स्लोली व्हाट विल हैपन? लिटोसॉल्स विल गिव वे टू द पोडसॉल्स. ठीक है, तो दैट इज द केस. अब इसी तरह से हमें यहां पर क्या मिलेगा? हियर वी विल बी फाइंडिंग टैगा. सो दिस इज द, इनको हम बोलते हैं ट्रू पोडसॉल सॉइल्स. यहां पर मिलते हैं. यहां पर व्हाट वी आर फाइंडिंग, देयर इज ब्राउन forest. Here also brown forest soils. ठीक है, and then there is the tundra soils.
So can you see, अगर मैं एग्जाम में लिख रहा होता तो I should have made this diagram to show that there is almost an overlapping. So much is the strong of the role of climate in determining the soil characteristics. ठीक है, जैसा कि मैंने बोला ये अभी नहीं समझ में आएगा बिकॉज अभी हमने सॉइल टाइप्स नहीं पढ़ा, वी हैवंट स्टडीड द क्लासिफिकेशन. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं. दिस विल बिकम क्लियर वंस वी डू दैट. ओके, so one if you talk about the active soil former is the climate. Second if you talk about is the biota. So biota क्या क्या करता है? Number of things. First important thing biota does is what? It furnishes the organic content to the soil. So organic content to the soil. What else it does? Biota और क्या करता है? Can I say, does it improves the texture and structure of the soil? So it also improves the texture and structure of the soil. Texture and structure of the soil. तो कैसे टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल को इंप्रूव करेगा? टेक्सचर की अगर मैं बात करूं, टेल मी, डू यू नो दैट देयर इज ऑल्सो अ थर्ड टाइप ऑफ वेदरिंग जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग, जो कि इधर बायोफिजिकल हो सकता है या फिर बायोकेमिकल वेदरिंग हो सकता है. ठीक है, इन एनी ऑफ द केस कैन वी से इट विल फर्दर लीड टू ब्रेक डाउन ऑफ द पार्टिकल्स? Yes or no? So again, it improves the texture of the soil. It also furnishes organic matter, जिसको मैंने बताया था. It can behave as a binding agent, so it can improve the structure of the soil. ठीक है, so that is the primary role which is played by biota. और क्या रोल प्ले करता है biota? Can we say biota also protects the soil, particularly vegetation? ठीक है, so presence of vegetation protects the soil. इसके अलावा और भी चीजें कर सकता है. पर्टिकुलरली जब हम वेजिटेशन की बात करते हैं तो इट कैन ऑल्सो प्ले रोल इन सॉइल डिफरेंशिएशन or differentiation of soil horizons. It can also play a role in differentiation of soil horizons. एग्जाम्पल इसका देना है मुझे, तो कौन से सॉइल्स का एग्जाम्पल दूंगा? पॉडजोल सॉइल्स. फॉर एग्जाम्पल इन पॉडजोल सॉइल्स, सिंस द प्रोसेस ऑफ पॉडजोलाइजेशन अभी हमें पढ़ना है तो इसलिए मैं इसको इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं करता हूं. जस्ट अभी रिमेंबर कर लो कि हाउ इट इज. इफ आई हैव टू राइट, आई विल रिमेंबर फॉर्मेशन ऑफ पॉडजोल सॉइल्स. ठीक है, तो बायोटा. अब ये जो प्राइमरी सॉइल फैक्टर्स जिसकी हमने बात की, या फिर जिसको बोल रहे हैं हम एक्टिव सॉइल फॉर्मर्स, जब इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, when they dominate in soil formation, which type of soils will be formed? This type of zonal soils will be formed. ठीक है, जो कि बड़े बड़े जोन्स में मिल रहे हैं, क्लाइमेटिक जोन्स में. ठीक है, तो लिख लो इसको. when the active soil formers dominate in soil formation, zonal soils are formed.
ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इज द passive soil formers or secondary factors, and one of them is parent material. So what is the role of parent material? Can I say the inorganic content of the soil is furnished or supplied through what? Weathering of the parent material. So inorganic content supplied through weathering of parent material. ठीक है, so can I say thus the structure of parent material will strongly determine the characteristics of the soil? Yes or no? So we can say that thus the structure of parent material strongly determines the characteristics of the soil. You already know about structure of rocks. तो स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स में हम क्या क्या चीजें देखते हैं? वी लुक इनटू द स्ट्रेंथ ऑफ रॉक्स, फॉर एग्जांपल। तो सपोज रॉक्स बहुत हार्ड रॉक्स हैं, तो हार्ड रॉक्स में वेदरिंग कैसे होगी? विल इट बी स्लो प्रोसेस? एंड इन दैट केस व्हाट विल हैपन विद द सॉइल? कैन वी से इट इज पॉसिबल इट माइट नॉट बी फुली डेवलप्ड, इट माइट बी मोर कोर्स टेक्सचर्ड। ठीक है, सो अगेन दैट इज द केस। स्ट्रक्चर का एक एस्पेक्ट होता है कंपोजिशन। ठीक है, सो किस तरह के कंपोजिशन का रॉक्स हैं, तो उसके हिसाब से क्या होगा, सॉइल में कौन से मिनरल्स हैं वो डिटरमाइन होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल थिंक, अगर लाइमस्टोन रॉक्स की वेदरिंग हो रही है तो कैन आई से कि ऐसे सॉइल में कैल्शियम बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो दैट इज हाउ इट डिटरमाइंस द सॉइल। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक कितनी पोरोसिटी है, परमिएबिलिटी पेरेंट मटेरियल में है, वो भी डिटरमाइन करती है वेदरिंग के रेट को। तो नंबर ऑफ वेज इट डिटरमाइंस। ठीक है, इस पे हम एक चीज लिख सकते हैं, कैन वी से कि समटाइम्स, टेल मी, हैव यू हर्ड अबाउट सर्टेन टर्म्स लाइक कैल्सीमॉर्फिक सॉइल्स? सुना है? कैल्सीमॉर्फिक सॉइल्स कौन से होते हैं? दीज आर द सॉइल्स विच आर वेरी मच रिच इन कैल्शियम। ठीक है, तो ये नाम कहां से आ रहा है? कैन वी से डज इट शोज द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट मटेरियल? यस और नो? So sometimes the influence of parent material is so much high that the soils are named after them. ठीक है, so sometimes the influence of parent material is so much high that the soils are named after them. So that is the role of parent material. Then next is topography. So topography will also play a very, very important role in determining the soil forming processes and soil characteristics. तो टोपोग्राफी में बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल टोपोग्राफी में वन इंपॉर्टेंट फीचर विच कम्स इज द स्लोप एंगल। स्लोप एंगल, ठीक है, सो टेल मी, कैन वी से दैट दिस स्लोप एंगल कैन रेंज फ्रॉम स्टीप टू वेरी स्टीप? ठीक है,
और अगर सपोज करो कि ये स्टीप टू वेरी स्टीप है, अब यहां पर वेदरिंग हो रहा है of the parent material, can I say this will be mass wasted? Yes or no? So in this case, the soil which will be formed, can I say it will be very thin? Yes or no? So again, in steep to very steep slope angles, we will be finding that there will be very thin soils would be found. These are also referred to as the skeletal soils. ठीक है, but there can be other extreme as well. ठीक है, एक दूसरा एक्सट्रीम भी हो सकता है, और वो दूसरा एक्सट्रीम क्या हो सकता है? द स्लोप इज फ्लैट. ठीक है, सो फ्लैट स्लोप्स. तो फ्लैट स्लोप्स किस तरह की कंडीशंस होती हैं? दीज आर कंडीशंस ऑफ डिफेक्टिव ड्रेनेज. These are conditions of defective drainage. और defective drainage मतलब क्या होगा? Can I say these areas would experience waterlogging? ठीक है, so they would experience waterlogging conditions. और जहां पर waterlogging हो जाएगी, हम बाद में देखेंगे, वहां पर ऑर्गेनिक कंटेंट का डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होगा. ठीक है, तो इस तरह के जो सॉइल्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे? दे विल बिकम वेरी एक्सेसिव, दे विल हैव वेरी एक्सेसिव ऑर्गेनिक कंटेंट. तो इस तरह के जो सॉइल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक सॉइल्स या फिर बॉग सॉइल्स. ठीक है, यू माइट हैव हर्ड अबाउट अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ कोल जिसको बोलते हैं पीट. ठीक है, सो वो इन्हीं कंडीशंस में डेवलप होते हैं. तो अगेन द स्लोप एंगल प्लेज इंपॉर्टेंट रोल. बिसाइड टोपोग्राफी के और भी फैक्टर्स हो सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, वन फैक्टर कैन बी रिलीफ और हाइट. रिलीफ और हाइट. So tell me, does the relief or height determines temperature conditions? Yes or no? So it determines temperature conditions. ठीक है, and if it determines the temperature conditions, obviously it will determine the type of soil. ठीक है, one more factor is the factor of direction of slope. ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ स्लोप को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस एज एस्पेक्ट. इट इज रेफर टू एज द एस्पेक्ट. तो टेल मी, ये एस्पेक्ट कई तरीके से डिटरमाइन कर सकता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, सन फेसिंग स्लोप्स हो सकते हैं. तो सन फेसिंग स्लोप्स में कैन आई से टेम्परेचर कंडीशंस वुड बी डिफरेंट. ठीक है, सिमिलरली और क्या हो सकता है? यू माइट हैव हर्ड अबाउट द विंडवर्ड स्लोप्स एंड लीवर्ड स्लोप्स. ठीक है, so again, like the relief, the direction of slope determines the climatic parameter, and thus it plays important role in the soil formation and the soil characteristics. ठीक है,
सो अगेन दिस इज अनदर फैक्टर. बाद में देखेंगे कि जब ये दोनों फैक्टर डोमिनेट करेंगे, ठीक है, जब ये जब ये दोनों फैक्टर डोमिनेट कर रहे थे तो किस तरह का सॉइल बन रहा था? जोनल. ठीक है. जब ये दो फैक्टर डोमिनेट करेंगे, वी विल सी that the type of soil which will be formed, it will be, we call it as intra-zonal soils. ठीक है. सो इंट्राजोनल का मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे सॉइल्स होंगे जो किसी जोन से जुड़े हुए होंगे. ठीक है. बट उनमें कोई एक, इन दोनों में से कोई एक कैरेक्टरिस्टिक का डोमिनेंस बिल्कुल साफ दिखाई पड़ेगा. ठीक है. सो सच टाइप ऑफ सॉइल्स आर इंट्राजोनल सॉइल्स. ठीक है. बट देयर इज वन मोर एंड दैट इज टाइम. ठीक है. सो टाइम कैसे रोल प्ले कर रहा है? टाइम का सिंपली रोल क्या है? टाइम plays a role as it determines the duration for which the soil forming processes have operated. ठीक है. So it plays a role as it determines the duration. It plays a role as it determines the duration for which the soil forming processes have operated. Duration for which the soil forming processes have operated. ठीक है. In case the duration is very small, that means the influence of these factors will be what? Less. And such type of soils, we will call them as azonal. They will not belong to any particular zone. ठीक है. So these are the factors affecting soil formation. I hope it is clear. बहुत सिंपल है अभी तक. अब आगे बढ़ते हैं and let us move on to soil forming processes. Soil forming processes. So for the purpose of simplification, what I am doing here is soil forming processes can be categorized into two types. Although you can understand कि ये दोनों एक साथ चल रहे होंगे हमेशा. ठीक है. Just for the purpose of simplification, we can categorize them into two types. So one and the second. So first is related with the accumulation of soil material and second is related with differentiation of soil horizons. Differentiation of soil horizons. ठीक है. तो सबसे पहले बात करते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल मटेरियल. यू कैन अंडरस्टैंड, फिर से बता रहा हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि हम इसको दो अलग अलग बात कर रहे हैं लेकिन ये दोनों हमेशा साथ साथ चलेंगे. ठीक है. तो एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल मटेरियल, फर्स्ट इफ वी टॉक अबाउट, first is one aspect of soil is inorganic material. So what is the primary process through which the inorganic material becomes part of the soil?
Can I say it is weathering of parent material? ठीक है. So the primary process is the weathering of parent material. That is the primary process. But tell me, is it the only process which can enrich the soil? ऐसा तो कोई जरूरी नहीं हो सकता. सुना होगा तुम लोगों ने रिवर प्लेन्स के बारे में. रिवर प्लेन्स में क्या होता है? These are the flood plains, and in flood plains what happens? There is deposition of material which is being done by the rivers. ठीक है. So again it can be also result of what? Due to deposition by agents of erosion, which can be water, wind, even glaciers. ठीक है. So deposition by the agents of erosion. Have you heard about a special type of plain which is formed by deposition done by winds? क्या बोलते हैं उसे? Lowest plains. ठीक है. So in lowest plains it is the wind which is depositing the material and it enriches the soil. So examples of this is very commonly found in flood plains, and the lowest plains. So that is one. क्या यही होता है या और भी कुछ हो सकता है? Is there a possibility of something else? Other factors can also be there, like can we say accumulation of material? Of various type of materials can be there, like volcanic ash और dust. तो जब वोल्केनो एक्सप्लोड होगा तो उससे बहुत सारी वोल्केनिक एश डस्ट निकलेगी और वो धीरे धीरे सेटल हो जाएगी. एंड कैन इट बिकम पार्ट ऑफ द सॉइल? ठीक है. इसी तरह से व्हेन द मीटियोराइट्स आर बर्निंग इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, देन व्हाट हैपेंस? इज देयर फॉर्मेशन ऑफ कॉस्मिक डस्ट? ठीक है. तो ऑल ऑफ दीज कैन फर्निश द इनऑर्गेनिक मटीरियल टू द सॉइल. ठीक है. सो दिस इज हाउ द इनऑर्गेनिक मटीरियल इज supplied to the soil. Then there is organic material. Organic material is supplied in the form of leaf and litter by biota. Leaf and litter by the biota. Primary role here is of what? Vegetation. ठीक है. So within this primary role. In fact, there is a special process which is referred to as humification. Humification. So what is humification? It refers to decomposition. Humification refers to decomposition of leaf and litter. Leaf and litter into a black substance. Into a black substance referred to as humus.
referred to as humus. It is accomplished by humifying bacteria. The process is accomplished by humifying bacteria. ठीक है, तो दैट इज द केस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल. सो ये कहने का मतलब है कि साथ में एक प्रोसेस चल रहा है, एक्यूमुलेशन होता जा रहा है, और ये एक्यूमुलेशन होता जाएगा. व्हाट विल हैपन, दैट मींस व्हाट विल हैपन टू द थिकनेस ऑफ द सॉइल, it will keep on increasing with time. But simultaneously there is also the second process ongoing, that is differentiation of soil horizons. ठीक है, तो differentiation of the soil horizons. So differentiation of the soil horizons, it will be function of, जैसा कि हमने पहले भी बोला था, function of the climatic regime. ठीक है, so सबसे पहले it is function of what? Moisture regime. So one is moist or humid regime, ठीक है, and other is the dry regime. In general, moist or humid regime में we can say that precipitation is greater than the potential to do evapotranspiration. Potential to evapotranspiration. ठीक है, so such type of regimes are referred to as the humid regimes. Dry regimes में क्या होता है? It is reverse. So in dry regimes, precipitation is less than the potential to evapotranspirate. ठीक है, तो जहां पर भी ह्यूमिड रिजीम्स होंगी वहां पर डोमिनेटिंग प्रोसेसेस कौन से होंगे? दीज डोमिनेटिंग प्रोसेसेस, थ्री टाइप ऑफ कॉमन डोमिनेटिंग प्रोसेसेस वुड बी फाउंड. एंड ये डोमिनेटिंग प्रोसेसेस कौन से होंगे? वन इज लीचिंग, सेकेंड इज एलुविएशन, एंड एलुविएशन के साथ हमेशा एक प्रोसेस जुड़ा हुआ होगा. क्या होगा वो? इलुविएशन. तो लीचिंग, एलुविएशन एंड इलुविएशन. ठीक है, सो एक एक करके बात करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं लीचिंग. सो लीचिंग, व्हाट इज एसेंशियली लीचिंग? पहले मैं समझा देता हूं. लीचिंग इज अ प्रोसेस वेयर बाय द मटीरियल इज लॉस्ट फ्रॉम द टॉप सॉइल इन सॉल्युबल फॉर्म. ठीक है, सो सॉल्युबल फॉर्म्स लाइक देयर कैन बी सर्टेन बेसेस विच बिकम सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, देयर आर सर्टेन अदर्स लाइक सेस्क्वी ऑक्साइड्स, they become soluble in water. So in the process of leaching, the material is lost from the topsoil in soluble form, is lost from the topsoil in soluble form. Soluble form, such as soluble bases,
सेस्क्वी ऑक्साइड्स, सेस्क्वी ऑक्साइड्स, बाद में समझाऊंगा व्हाट इज दिस सेस्क्वी ऑक्साइड्स एटसेट्रा। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लीचिंग इज व्हाट, देयर इज कंप्लीट लॉस ऑफ द सॉइल मटीरियल, there is complete loss of the soil material, and this is how it differs from the other similar type of phenomena, that is alluviation. That is alluviation. ठीक है, सो अगर मैं एलुविएशन की बात करूं तो एलुविएशन में क्या हो रहा है, इट रेफर्स टू मैकेनिकल, देख लो, इट रेफर्स टू मैकेनिकल डाउन वेस्टिंग, मैकेनिकल डाउन वेस्टिंग ऑफ सॉइल मटीरियल, particularly the colloids, particularly the colloids। देखा था अभी हमने colloids क्या होते हैं, the finer particles, particularly the colloids from the top soil। ठीक है, तो ये लीचिंग से कैसे डिफरेंट है, इसमें the material which is going, it is going in mechanical form, it is not dissolved। ठीक है, and second, there is complete loss of the material is not taking place, because associated with it is another process, illuviation। तो illuviation क्या है, it refers to collection of the material, it refers to collection of the material lost from the top soil into the B horizon, into the B horizon। सो ऑलरेडी हमने देखा है बी होराइजन की कैरेक्टरिस्टिक्स, मुझे इसको और इलैबोरेट करना होगा, तो कैन आई राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बी होराइजन। तो व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ एलुविएशन, इसका रिजल्ट क्या होगा, फाइनर मटेरियल यहां पर कलेक्ट हो जाएंगे बी होराइजन में, जिसकी वजह से देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हार्ड पैंस। ठीक है, सो जो चीजें हमने वहां पर लिखी थी, इफ आई हैव टू इलैबोरेट आई कैन डू दैट। So this phenomena is referred to as the illuviation. I hope it is clear. Now, depending upon the temperature regime, अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, मॉइस्चर regime के बेसिस पर। So depending upon the temperature regime, these three processes can work or develop different type of soils. ठीक है, so depending upon the temperature regime, टू टाइप ऑफ रिजीम्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कूल एंड हॉट, या फिर वार्म सो जो कूल रिजीम्स होते हैं वहां पर जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं पोडोलाइजेशन। ठीक है, अदर टर्म विच वी यूज फॉर दिस पोडोलाइजेशन इज सिलिकेशन। सिलिकेशन, ठीक है, जो हॉट रिजीम्स होंगे यहां पर हमें क्या मिलेगा, द प्रोसेस इज रेफर टू एज लेटराइजेशन या फिर डीसिलिकेशन।
लेटराइजेशन या डीसिलिकेशन। ठीक है, सो सबसे पहले बात करते हैं पोर्टोलाइजेशन। इसका सारे का टेक्स्ट इज रिटन इन द मटेरियल, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट। तो पोर्टोलाइजेशन को हमने अभी क्या बोला, इट इज ऑल्सो सिलिकेशन प्रोसेस। तो एक्चुअली देखो होता क्या है, पोर्टोलाइजेशन सबसे पहली बात कहां पर होगा, इट विल अकर इन एरियाज वेयर देयर इज प्रेजेंस ऑफ कॉनिफरस ट्रीज। ठीक है, तो ये कहां पर होगा, इन प्रेजेंस ऑफ कॉनिफरस ट्रीज। ठीक है, सो कॉनिफरस ट्रीज जहां पर होंगे, देयर लीव्स ऑफ दीज ट्रीज कंटेन अ केमिकल। ठीक है, एंड दिस केमिकल इज रेफर्ड टू एज चिलेट। ठीक है, सो इनकी जो लीव्स होती हैं उसमें एक केमिकल मिलता है जिसको बोलते हैं चिलेट। सो व्हाट हैपेंस व्हेन दिस चिलेट combines with iron and aluminum which is present in the soil, what it results into, it results in formation of soluble sesquioxides of iron and aluminum। ठीक है, तो चिलेट्स केमिकली कंबाइन करता है आयरन एंड एल्युमिनियम। यू नो आयरन एंड एल्युमिनियम इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, बट व्हेन इट कंबाइंस विद चिलेट्स देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सेस्क्विऑक्साइड्स व्हिच आर सॉल्युबल in water. So as a result of which what will happen, the leaching will take place and iron and aluminum will be lost. ठीक है, so now see, it means something like this will happen. So हमें पता है कि there is presence of organic content in the soil, there is presence of bases, there is presence of iron and aluminum, and there is presence of silica. These are the main contents of the topsoil. So when there is excessive water available in humid cool regimes, what will happen, this organic content can leach out. ठीक है, bases can also dissolve and they can also leach out. ठीक है, एंड यू नो कि दिस इज कोलॉइड, तो अगर ये बाहर जा रहा है तो साथ में क्या होगा, बेसेस भी चली जाएंगी। आयरन एंड एल्युमिनियम नॉर्मली इट वुड हैव बीन रिटेन्ड, बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉनिफर्स एंड द चिलेट्स it will be converted to soluble sesquioxides and thus it would also be leached out. So what will be left in the topsoil? Silica. ठीक है, so thus what will happen, topsoil gets enriched in silica. टॉप सॉइल गेट्स एनरिच्ड इन सिलिका। ठीक है, अब सोच करके देखो कि ऐसा एरिया जहां पर कॉनिफरस ट्रीज ही मिल रहे हैं, कैन आई से कि वहां पर ये प्रोसेस बहुत ज्यादा डोमिनेंट होगा। ठीक है, तो डज दिस मीन्स दैट सच एन एरिया इज टैगा फॉरेस्ट? देखा था अभी हमने टैगा फॉरेस्ट रिजीम में, हमने क्या देखा, डिड वी रोट, पलट करके देखो, डिड वी रोट देयर ट्रू पोर्टजोल्स। ठीक है, तो ये जो ट्रू पोर्टजोल्स होते हैं इनको और किस नाम से बोला जाता है, एश ग्रे पोर्टजोल्स। ठीक है, दे आर ऑल्सो रेफर टू एज द एश ग्रे पोर्टजोल। वाई? बिकॉज उनका कलर व्हाइटिश हो जाता है। एश कैसा होता है, व्हाइट,
whitish, and that is because of the excessive silica present in the topsoil. ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज रेफर्ड टू एज द पोडोलाइजेशन प्रोसेस, इसीलिए क्योंकि इसमें सिलिका का एक्यूमुलेशन हो रहा है, इसलिए हम इस प्रोसेस को और क्या बोलते हैं, सिलिकेशन। ठीक है, हम बाद में देखेंगे, वी विल सी कि जो मेन एरिया जहां पर ये पोडोलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, यहां पर बहुत एक्सेसिव हो रहा है, बट एज यू गो इन द टेम्परेट क्लाइमेट्स, ठीक है, you will still find that the conifers will be found in mixed manner. ठीक है, जैसे कि मैं ब्रिटिश टाइप में जाऊं या फिर मैं लॉरेंशियन में जाऊं, इवन टू सम एक्सटेंट अप टू चाइना टाइप इन मेडिटेरियन, वी विल बी फाइंडिंग दैट देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ कॉनिफर्स इन मिक्स्ड फॉर्म। सो वहां पर अगर कॉनिफर्स मिल रहे हैं इन मिक्स्ड फॉर्म, दैट मीन्स वहां पर भी पोडोलाइजेशन हो रहा है, ऑल्दो इट विल नॉट बी एज मच एक्सेसिव एज इट इज टेकिंग प्लेस हियर। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर मैं जाऊं यहां ब्राउन फॉरेस्ट में, तो वहां पर देयर मस्ट बी सम आयरन रिटेन्ड। ठीक है, एंड सम ह्यूमस इज ऑल्सो रिटेन्ड इन द सॉइल, बिकॉज ये डेसिडुअस फॉरेस्ट है, यहां पर लीव्स बहुत ज्यादा गिरती हैं, तो इसलिए हम देखेंगे कि यहां पर ह्यूमस बनता है तो ब्लैक होता है, ब्लैक, और क्योंकि आयरन भी रिटेन्ड हो जा रहा है थोड़ा, दोनों को मिक्स करोगे ब्लैक और रेड को, तो कौन सा कलर बनेगा, ठीक है, बट अगेन इट इज ऑल्सो व्हाट, इट इज अ टाइप ऑफ पोडजोल सॉइल। ठीक है, हम्म हम्म मीजोफिटिक, हाँ ठीक है, जो भी मेजॉरिटी ऑफ जो प्लांट्स होते हैं दे आर मीजोफिटिक। ओके, so that is the case of podolization. Then next one is जिसको हमने बोला desilication. It is also alternatively referred to as laterization. ठीक है, तो देखो लेटराइजेशन में नाम से ही पता चल रहा है कि हियर व्हाट इज गोइंग आउट ऑफ द सॉइल, सिलिका इज गोइंग आउट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सिलिका इज दैट solubility of silica is directly related to temperature. ठीक है, so solubility of silica is directly related to temperature. That means अगर higher temperature होगा तो सिलिका की solubility क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, so now think we are talking about tropical regimes. ठीक है, so हमें क्या क्या मिल रहा है, so again leaching and eluviation means organic content being removed, bases being removed. Here in warm temperature silica becomes more mobile. ठीक है, तो silica is also leached out. So what is now left in the soil, iron and aluminum. ठीक है, और this iron it converts to ferric oxide through oxidation process. ठीक है, and thus what type of soils would be formed, there is formation of latosols. These are also referred to as the red soils. ठीक है,
So later soils or the red soils would be formed. I hope it is clear. अब इसमें देखो एक और चीज, when this process occurs under special circumstances, there is formation of a type of intrazonal within the latosols that is referred to as laterite soil. ठीक है? So when this process occurs for prolonged period, under special circumstances, it is referred to as the laterite soils. ठीक है? So there is formation of laterite soils. अब ये जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं, ये दो होते हैं. One important special circumstance is alternate wet and dry climate, like found in monsoon, like it is found in savanna. ठीक है? And second, if you talk about, is highland, presence of a highland. Highland क्या होता है? Can I say highland will receive more precipitation and thus it will experience more leaching? ठीक है? So highlands क्या करते हैं? They receive greater precipitation and thus experience greater or intense leaching. ग्रेटर और इंटेंस लीचिंग. ठीक है? सो एक तरह से लेटराइट सॉइल्स क्या होते हैं? दे आर डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ लेटोसॉल्स का ही एक डिग्रेडेड फॉर्म है. सो बाद में देखेंगे कि लेटराइट सॉइल में यही फिनोमेना जो है वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो गया है. एंड इन दीज सॉइल्स, बिकॉज ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई क्लाइमेट है, तो जब ड्राई क्लाइमेट होता है तो क्या होगा कि दिस अपर पार्ट इज लाइक, जैसे यू हैव सीन ब्रिक, इट इज बेक्ड लाइक अ ब्रिक. ठीक है? सो द अपर पार्ट, दिस बिकम्स वेरी वेरी हार्ड. ठीक है? लाइक अ ब्रिक. So here there is formation of those hard pans. ठीक है? और वो हार्ड पैन्स इसलिए एग्रीकल्चर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. यू कैन अंडरस्टैंड दैट दीज आर डिग्रेडेड सॉइल्स, तो उसमें ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स की कमी है. देयर पीएच इज ऑल्सो, यू कैन अंडरस्टैंड, इट इज लो, दे आर वेरी एसिडिक. ठीक है? तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इनमें. इनफैक्ट अगर हार्ड पैन हो जाएगा तो कैन यू अंडरस्टैंड दैट इसमें देयर विल बी लेस इनफिल्ट्रेशन इन दोज पीरियड्स एंड दस देयर विल बी मोर रन ऑफ. मोर रन ऑफ का मतलब है कि सॉइल का लॉस भी ज़्यादा होगा. इसीलिए बाद में देखेंगे कि जो लेटराइट सॉइल के लिए बेस्ट एग्रीकल्चर है वो क्या है? परमानेंट वेजिटेशन टाइप. तो या तो उसको फॉरेस्ट्री के लिए बेस्ट यूज़ किया जा सकता है. अगर हमें एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करना है तो बेस्ट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर जहाँ पर जो क्रॉप कवर है वो मोर परमानेंट है, जैसे कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर. ठीक है? ओके. सो दैट इज द केस ऑफ द लेटराइट सॉइल. So that is all these are particularly taking place where? In the humid regimes. Humid regimes में एक और last just a separate phenomena,
ग्लेइंग। ठीक है, तो ग्लेइंग क्या होता है? इट इज टेकिंग प्लेस वेयर? इन एरियाज ऑफ डिफेक्टिव ड्रेनेज कंडीशंस। डिफेक्टिव ड्रेनेज कंडीशंस में देयर वुड बी वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग से क्या होगा? देयर विल बी एनारोबिक कंडीशंस, and due to these anaerobic conditions ferric oxide is reduced to ferrous form. ठीक है, ferric oxide is reduced to ferrous form. So what will happen with the color of the soil? It will become bluish greenish. The color changes to bluish greenish. ठीक है, so this phenomena is referred to as gleying. Okay, आज के लिए बंद करते हैं. We'll continue this tomorrow. So tomorrow, whether you understand it or not, it will very much depend upon कि आज का रिवीजन किया है या नहीं. आज का रिवीजन अच्छे से किया होगा तो क्लासिफिकेशन बिल्कुल मस्त तरीके से समझ में आ जाएगा. अगर नहीं किया है तो यू विल स्ट्रगल. ठीक है, पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है? द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन अंडरस्टैंडिंग दीज प्रोसेसेस. ठीक है, ओके, गुड बाय, टेक केयर, विल मीट टुमारो.